welcome. You're watching News Hour Agenda. I'm Padmaja Jodi. The mystery of the magnificent marble in Delhi's Sheesh Mahal has become even more interesting. When we broke the story of the Pearl d'Or marble, people were mystified. Why was this chosen? Was nothing else available? Was the use of this marble advised for some special reason? Because it's extra secure. Only this marble can be used for the Chief Minister's residence. Today we can tell you that in fact, the case is the exact opposite. The notice inviting tender in 2020 for works in the Chief Minister's residence said very clearly that what was chosen was marble stone flooring with 18 mm thick marble stone, including rubbing and polishing, Makrana white first quality, as per the direction of the engineer in charge. The basic rate of the Makrana white marble should not be less than 700 rupees per square feet, as verified and approved by the engineer in charge. What does this mean? This means that this particular document said very clearly that the Makrana white marble is what should be bought, and that has been approved by the engineer in charge. Contrary to this advice, what was bought was d'Or pearl marble at a cost of 11,000 rupees per square feet. 750 rupees per square feet, 11,000 rupees per square feet. More than 10 times the amount that was approved. Added to this was the cost of polishing the d'Or marble. As a result, the same beautification, the same marble flooring that could have been done with Makrana marble at a total cost of 82 lakh rupees was eventually completed at a cost of 3.33 crores. The math. This alone was an escalation of 1500% over what was approved. Mind you, the Makrana marble that was advised by the engineer-in-chief has been used to build the Taj Mahal. What you see on your screen right now are actual grabs of the Makrana marble. We went, we searched for it. That is the Makrana marble on your left. On your right is the Pearl d'Or marble. Frankly, for a lay person, I don't see what is the great difference. Then what was the crushing need to get a marble that is 1,500 times more expensive? If the Makrana marble from Rajasthan is good enough for Taj Mahal, why isn't it good enough for Mr. Kejriwal's Sheesh Mahal? All right, RP Singh, national spokesperson of the BJP, joins us. Avnijesh Awasthi, political analyst. Rajkumar Chauhan, a former Congress minister, also with us. Dr. Suman C. Raman and Parvinder Singh Sethi, political analyst. Let me first ask you, Avnijesh ji, I want to show you both the pictures, the Makrana marble and the d'Or marble. Do you think that the d'Or marble is so beautiful that it should be 1,500 times more expensive? Maybe I don't have taste. Maybe you could say कि हाँ ये सुंदर तो है बहुत. 1,500 times more expensive होना ही चाहिए. I have no idea about this type of marble, but just to be very clear. But the most important thing is, आप पिछले 72 आवर्स से ये बहस कर रहे हैं. आम आदमी पार्टी के सपोर्टर अभी प्रीवियस डिबेट में भी क्या कहा कि ये तो है ही नहीं. आप बताइए, जो सब झूठे कागज है ये तो. और अल्टीमेटली मैं आपको बता रहा हूं कि सत्येंद्र जैन के सिग्नेचर वाले पेपर से अल्टीमेटली सत्येंद्र जैन के सिर पर ठीकरा फोड़ा जाएगा. पहले दिन तो एक सपोर्टर ने ये कह दिया, रवि श्रीवास्तव ने, कि आपको कैसे मालूम कि अरविंद केजरीवाल ने डिमांड की थी इसकी. उन्होंने तो डिमांड ही नहीं की. उनको क्या पता उनके घर में आके कोई 8 लाख का पर्दा लगा गया. उनको क्या मालूम कि मकराना की जगह d'Or मार्बल लग गया. आपको मालूम है कि आपके पास प्रूफ है क्या कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था. अल्टीमेटली 45 करोड़ आम आदमी पार्टी के लिए कुछ नई बात नहीं है. बड़ी चीजें करी हुई हैं. ये कहते हैं 45 करोड़ पे ये एक पूरा चैनल जो है 2 दिन से लगातार लग रहा है. ये तो बड़ी वेरी स्मॉल थिंग उनके लिए. ये क्या बड़ी चीज है. तो बात बड़ी साफ सी है कि अब जब
लोगों को लगता है कि जिस लालू यादव, जिस शीला दीक्षित के बारे में इन्होंने कहा था कि उनके तो जी टॉयलेट में भी लगा हुआ है जी, 10-10 एसी लगे हुए हैं, आपको मालूम है जी, और आपके पास क्या है जी, आपको मालूम है जी क्यों इनको रहना चाहिए जी, लाल बत्ती क्यों होनी चाहिए जी। अब इनसे पूछिए जी कि मकराना क्यों है जी, ये नाइट शेल्टर में क्यों नहीं सोते जी, आम आदमी है, मफलर लगा करके सर पर मफलर है तो और बाकी चीज की जरूरत भी नहीं है, नाइट शेल्टर में सोते ना जी, ये 45 करोड़ रुपए सिर्फ रिनोवेशन पे क्यों कर दिए जी, कोई इनसे पूछे ना जी। लेकिन बात ये पद्मजा जी, आप जितना मर्जी पूछ लो, 2 दिन से आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा, आप दिखाए जा रहे एक के बाद एक डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद भी जब रवि श्रीवास्तव ये कहे कि मैं नहीं बिलीव करता जी, न्यूज चैनल टाइम्स नाउ पे भरोसा नहीं है, बाकी न्यूज चैनल पे नहीं है, मुंबई के अखबार पे उनको भरोसा है, कहते हैं अखबार में एक छोटी सी खबर छपी है जी कि ये बीजेपी वालों ने दिए थे इनको, तो इसलिए ये झूठे हैं। अब ऐसे में क्या करेंगे आप जी? अवनीश जी, डॉक्यूमेंट पे हम भरोसा ना भी करें, I frankly couldn't believe my eyes when I learned that this Makrana marble, which was approved by the chief engineer in charge, was actually used for Taj Mahal. Dr. Sumansi Raman. It said that Shah Jahan he brought the very best for his dear Mumtaz Mahal. उन्होंने भी मकराना किया, वो भी he also said that Makrana marble is good enough for my dear Mumtaz. But Mr. Kejriwal said, no, Shah Jahan has no taste. Pearl Dior is better. Why? If it can suffice for Shah Jahan, surely it can suffice for the CM's residence. Okay, on a lighter note, Padmaja, was Pearl Dior existing in the times of Shah Jahan? That's a great point. Yeah, that is a great argument. It was there at that time. Yeah, so that is a good reason. So let's leave अगर Pearl Dior होता तो शाहजहां भी Pearl Dior खरीदते. Yes, of course. Yeah, he would have gone for it perhaps. This is the answer from an AAP supporter. Okay, but Padmaja, on a serious note. No. 1 minute. Go on, Padmaja, yes. On a serious note, there are 2-3 points that I want to make. From the time that this debate started, I have seen various estimates being put out for the toilets, for the curtains, and for the flooring. Yes. Totally, all of these seems to add up to around 7, 8, 9 crores. That's it. What has the remaining 35 crores odd been spent on? Now, that has not been highlighted. It has been. You should have watched my show more closely. I'll tell you why. No. First of all, hold on a second. No, tell me. No, I'll tell you. No, I watched it. I will tell you. I will tell you. Tell me. So, we have highlighted that there are several kind of buildings that have been done within the Chief Minister's residence which are security related. For example, some firewalling has been done, a sprinkler system has been put, some pavements have been made. It is never our argument that you should not have fire safety features. Pavement also, we're like, okay, fine, you put ever stone you want to put there. But this is outlandish luxury which was not needed. How rupees toilet is not needed. Let's be very clear about it. A smart commode is not needed, which is remote control operated. It is not. Nobody can argue, the Chief Minister, he deserves it. It will keep him secure. I'm sorry. A regular commode will keep everyone as secure. 1 second. You don't need a 4 lakh rupees toilet. 1 second. No, 1 second. Padmaja, 1 second. Yes. I am not for a moment saying that a 4 lakh toilet is needed or not needed. My point is 21,000 square feet has been built from scratch, from ground up. So if you could let us know where this 35 crore or 30 crore, even if you exclude the sprinkler and the other cost went, then it will help us, because otherwise the math doesn't add up. You're just saying 44.8 crore was withdrawn for Dr. the purpose Sumansi of this Raman, building. you really know how to go into a long, laborious debate. I have all documents. I will fax them to you. I have marked out everything. I'm not going into a laborious debate. I'm not able to understand, Padmaja. It is laborious. Off the cuff, I can tell you that curtains have been bought for 97 lakhs, carpet for 20 lakhs, pillars for 27 lakhs. You've got 3.3 crores on flooring. Then you've got 25 lakhs for a water heater. I calculated all the amounts that you put out. It doesn't cross 10 crore.
Sir, I will All send the you the amounts that you documents. put up doesn't They go cost to 10 a crore. Where is the full remaining amount? 45 What crores. has it been But I will spent? not get into that laborious debate. Would you care? Sir, Would you care Padmaja. to? Would you care to you comment answer that. on You have why not answered Makrana that. marble? How much was the civil construction? Sir, tomorrow What I was will the call you back on the construction debate. cost? I will One call you second. back on the What was debate and give you the construction full cost civil for construction ka also. Oh, by the 21,000 way, square feet? since you asked how much Civil was the civil construction expenses cost. on, here it How is. much was spent? Here. The civil expenses are actually at 6 Yes, crores. Here it Yes, is. 6 crores 1,99,532 plus 1 crore 59,007 1 crore 59 lakh 7,139. So first batch was 7 crore 67 lakhs 7.5 crores. 6,671. Okay, this is the first batch. Then, sir, there are a series of extras. We'll keep sitting here till kingdom come. I will call you tomorrow, give you an exact breakup of 45 crores since you want to get into that. But this is not the time. Right now, I want to ask you a simple question. Dr. Suman Siraman, you always derail the debate. I want to ask you a simple question on the limited issue of marble. On the limited issue of marble. Why did anyone need to buy Dior marble when Makrana has been very good for everyone, including Shah Jahan? He has already answered. But does Kejriwal know that? Did Kejriwal order and say Makrana is not good for me, not good enough for me, please order I have Dior? already said. So now I know want this. to. See, the whole very point interesting. is No. that Did we- Mr. Kejriwal know? Hold on a second. No, 1 second. Who went shopping No. for the marble? I Hold know on. there was a- Who there went was a shopping for the dealer who marble? said- We will give you a said slight Mrs. hint Kejriwal because we came and spoke saw to the one marble. of the His wife marble went- suppliers in Delhi who had a certain visitor who bought a certain something from him. Did Mr. Kejriwal know that this marble was being bought? Listen to this marble dealer in Delhi. Listen. सुनीता केजरीवाल जी आई थी और उनके साथ में शायद कोई कॉन्ट्रैक्टर भी थे, तो उन्होंने आके पहले पसंद किया मंदिर और उसमें कुछ उन्होंने एडिशन ऑल्ट्रेशन का बताया और उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से मंदिर बनाया गया था और भेजा गया था। तो ये कब की बात है सर? ये करीब साल सवा साल पहले की बात है। साल सवा साल पहले की बात है। तो वो मंदिर क्या इसी तरीके का था वो? हाँ जी, तकरीबन इसी टाइप का था और वो उनके साइज के अकॉर्डिंग ही बनाया गया था और जैसा जैसा उन्होंने बताया था कि कितनी हाइट चाहिए और वो सब उसी हिसाब से बनाया गया था। अच्छा, तो सर ये जो मंदिर जो है, ये मंदिर इसकी क्या कीमत है इसकी? जो मतलब वो किस कीमत पे वो मंदिर ले गए थे? कीमत तकरीबन अभी वैसे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा मुझे, बाकी ये जैसे पर्टिकुलर ये मंदिर है करीब 1 लाख के आसपास का है। ऑन साइट आप भी गए थे वहां पे देखने के लिए? हम 2 बार ही गए हैं वहाँ पे। तो वहां पे सर जब आप पहुंचे तो किस तरह का वो दिख रहा था वहां पे? क्योंकि तो आप तो लास्ट समय ही गए होंगे जब वहां पे वो चीजें जब फिनिशिंग के मोड में थी, तो क्या कुछ चीजें आपको वहां पे दिखी थी? नहीं, हमने तो देखा तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे जमीन से ही सारा काम शुरू हुआ है और काफ़ी लार्ज स्केल पे काम हो रहा था और सारा स्ट्रक्चर भी, मार्बल का काम भी, वुड वर्क भी, एल्युमिनियम का काम भी, सारे ही काम चल रहे थे उस टाइम तो फिनिशिंग का काम चल रहा था। Let's go back to Mr. RP Singh now. Is it possible that Mr. Kejriwal didn't know at all that Makrana marble की जगह Dior marble खरीदा जा रहा है, Mr. RP Singh? Padmaja, let me clear 2 myths today. I mean, one is that this is not a CM residence at all. I mean, because every time the Aam Aadmi spokesperson comes, they say it's a CM's residence. No. Khurana ji stayed in a different residence. Sheila Dikshit ji stayed in a different residence. Saab Singh Verma stayed in a different residence. And he is staying in a different residence. This is not an allocated CM residence. It's a personal residence which he has picked up a choice. CM used to stay in a different residence and he has not gone to that residence. One. Secondly, while I was on the debate, I checked with 3 marble suppliers in the city. They said, sir, बढ़िया से बढ़िया वियतनाम का Dior मार्बल 1500 रुपये स्क्वायर मीटर का मिलता है, बढ़िया से बढ़िया। वो बोले कितनी थप्पी भेजनी है, सुबह भेज देंगे। I give a challenge. I'm putting this on a tweet also. I give a challenge. Let them buy best marble, Vietnam marble from any market, marble market, Rajouri Garden, Mangolpuri, Gurgaon market or MG Road market. Let them go ahead from buy any market and they can purchase it more than 1500 rupees per square meter of Vietnam. I'll tell you what is the reason behind it.
Reason is they didn't buy the Makrana because Makrana they thought would be caught. They will know, everyone knows about Makrana. Vietnam looks like a very swanky name. So buy something very swanky name. So when we escalate the bill from 1,500 to some 11,000 rupees, which you are saying, so no one should know, oh, this is imported from Vietnam, this will be so expensive. So you are saying, Mr. RP saying कि 1,000 रुपए स्क्वायर मीटर में डियोर मार्बल मिल जाता है दिल्ली में, 1,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर। 1,500 रुपए स्क्वायर मीटर में बेस्ट of the best. I'm putting on tweet and I'm prepared to take a challenge because while I was coming to the debate, I was just waiting for your rate because I never knew the rate of that 11,510 rupees. But 11,510 rupees. Now, while on the debate, I checked with. This is very mystifying. Mr. RP Singh saying that even the best Pearl Dior marble, Sethi Saab, Delhi में 1,500 रुपए स्क्वायर मीटर का मिलता है. For Mr. Kejriwal, it was bought at 11,510. मतलब जो दिल्ली का रेट है उससे भी 10 गुना ज्यादा. मैडम मार्बल के अंदर बहुत सारी वैरायटीज होती हैं. आरपी सिंह जी कहां से पता करके आए हैं? मार्बल के यहाँ के जो लोकल बिल्डर्स हैं वो भी इंपोर्टेड मार्बल है, उसमें चाहे वियतनाम का है चाहे इटालियन मार्बल है, उसमें बड़ी वैरायटी होती है. लेकिन नहीं, अरे सर आप चैलेंज देते रहो, भारतीय जनता पार्टी के सब लोग चैलेंज देते रहते हैं. लेकिन आप एक बात बताइए ना, मैं ये कहना चाहता हूं सर, देश के अंदर दो कानून नहीं हो सकते. देश के अंदर दो कानून नहीं हो सकते. जो कानून अरविंद केजरीवाल के ऊपर लागू होगा वही भारतीय जनता पार्टी के अदर स्टेट्स के सीएम के ऊपर होगा, अदर जो सेंट्रल मिनिस्टर के ऊपर होगा. आप उनका भी तो लाइए ना. जो एलजी हाउस में 15 करोड़, एलजी हाउस के रेनोवेशन में 15 करोड़ रुपए लगता है. प्रधानमंत्री आवास में. Mr. Sethi, I am advising you. I have spoken to sources within the Raj Bhavan. जो ये 15 करोड़ का आप फिगर दे रहे हैं, be very cautious about it. The LG sources have told me this is entirely fake and made up. 15 करोड़ का कोई खर्चा वहां नहीं हुआ है. यू आर सेइंग इट ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कल को आप पे डेफेमेशन का नोटिस आएगा, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे. एलजी हाउस सोर्सेज हैव टोल्ड मी वेरी क्लियरली 15 करोड़ का 1% भी खर्च नहीं हुआ है. रंगाई पोताई हुई है नोवेयर क्लोज टू 15 करोड़. सो बी वेल एडवाइज. जो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, आप उनको अंदर कर दो. अरे आप ऐसे थोड़ा ना बोले 15 करोड़ में कहूंगी. आपने अपना घर 3,500 करोड़ का बनाया है. यू कांट जस्ट से व्हाटएवर यू वांट. गुजरात के मुख्यमंत्री एक शॉपर लेके आते हैं 191 करोड़ का. जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है. अभी सर, अभी आप मार्बल की बात करो. अभी आप मार्बल की बात करो. होल्ड ऑन अ सेकंड. वी कीप गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. आप अभी चॉपर पे मत जाओ. लेट मी ब्रिंग इन मिस्टर राजकुमार चौहान. राजकुमार चौहान जी, यू नो अगेन एंड अगेन. ओके, आरपी सिंह वांट्स टू क्विकली रिस्पॉन्ड, देन आई विल कम बैक टू राजकुमार चौहान. यस, आरपी सिंह. 45 करोड़ का, एंड मिस्टर सुमंती रमन फॉर हिम आल्सो. No renovation can cost you 45 crore rupees. This is a bungling scam of a huge level. The money has been swindled. The contractor, the designer, the contractor was given some 3 crore additional as to give advice or what to use, what not to use. Exactly. The designer, so-called designer. 1 crore consultancy fees. The best part is, and that in itself is a huge story, which I'll come to you, Mr. Sumansi Raman. आप जो बोल रहे थे ना, that इतना सारा पैसा किधर जा रहा है, add up नहीं हो रहा. I would want to show you a very interesting thing, that a lot of this money is not even going in fittings, it is going in extras. It is going in things like extra labor element due to restricted area. उस पे 5 करोड़ खर्च हो गए हैं. Here it is. Extra labor element due to restricted area and restricted working hours, 5 crores. Why not file an FIR? Well, an investigation should happen. Abhi you are asking me where is the money going? Why not I file am an showing FIR? you, sir, that Look, there are Padmaja, exorbitant extras you which have to been make up- included. you have to make up Nobody your is telling mind. us You where have to these make up extras your go. mind. But hold on, see, you can't keep changing goalposts. Now you are like file an FIR. Let me bring in Mr. Rajkumar Chauhan. Rajkumar Chauhan जी, ये बताइए, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि अगर ये सब सामान खरीदा गया, मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था, ये पीडब्ल्यूडी ने अपने लेवल पे कर दिया. यू हैव बीन द मिनिस्टर. आप पहले ये बताइए कि जब ये टेंडर निकलता है
तो कौन चूज करता है कि फला मार्बल लगेगा या ढिमाका मार्बल लगेगा? ये कौन फैसला लेता है? देखिए मैडम, ये ऑलरेडी एक लिस्ट बनी होती है डिपार्टमेंट में कि कहाँ किस प्रपोजल में कौन कौन सी आइटम पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सीएम का रेजिडेंस है, सीएम की चॉइस से ये सब काम हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीएम को मालूम ना हो कि किस किस तरह की चीजें यहाँ पर लगनी है। ये सीएम की चॉइस के मुताबिक ये लगा है, और उसमें जो कॉम्पिटेंसी इन्होंने दी होगी वो भी किसी अपने आदमी को दी होगी। और ये टेंडर तो सिर्फ नाम के टेंडर ये लोग निकालते हैं, ये अपने लोगों को काम देकर ये वो काम करवाते हैं। ये टोटल का टोटल करप्शन है इसके अंदर। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि कोई बिल्डिंग, मैं कल से आपके चैनल्स पे देख रहा हूँ कि उन्होंने कहा हमने बिल्डिंग तोड़ के बनाई है। ये कहीं एक प्रूफ ऐसा ला दें कि गवर्नमेंट की कोई भी बिल्डिंग अगर टूटेगी तो विदाउट एलजी अप्रूवल वो बिल्डिंग भी टूट नहीं सकती है। ये आगे से आगे गलत चीजें, एक चीज को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ। Very important. Sumansi Raman, here you have a former PWD minister of Delhi saying there is no way the chief minister did not know what marble was being used in his house. In fact, he would have been given a list saying Dior, Makarana, X, Y, Z, and he would have picked one out. Padmaja, first of all, you have got to make up your mind. Is this a scam? In which case, what you are alleging effectively is that 45 crores was only shown as the budget, but the house probably cost a lot less and they swindled all the money, which is a different issue, which means you have to file an FIR and investigate. Or you have to say that Kejriwal is building a palace for himself, a vanity project, and therefore splurging public money. It can't be both. It could be. What is it? It could be. 45 crores is a hell of a lot of money. Then the route is very clear. File an FIR. As they say in Hindi, thoda khao, thoda But pachao. you're not giving You can always put like a 4 lakh toilet and keep 1 lakh in your pocket and give 1 crore to a friend who's also a consultant, and Correct. also Then put in which 8 case- crores in in which extra case- cost. In which case, that is not a vanity project, that is a scam. It can be In both. that case, you should call it a scam and The register vanity, an FIR. the vanity is the Corruption. one vanity Register costing an 1 lakh FIR. in the toilet, File and a the case, scam is the Padmaja. 1 crore given as Padmaja, consultancy fees. Padmaja, the purpose cannot be. I'll prove it to you right now, Padmaja. Okay, wait, Abnijesh please Awasthi also wants to file an respond. FIR. Abnijesh Awasthi, वो जवाब दे रहे हैं, बताइए. Yes. पद्मजा, सुमन रमन, ये वाकई स्कैम ही होता अगर अरविंद केजरीवाल ये न कहते आकर के कि मैं तो सिर्फ 3-4 कमरों में के मकान में रहना चाहता हूं, मेरे को कोई जरूरत नहीं है बड़ी गाड़ी की, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, तो ये सिर्फ स्कैम होता। लेकिन जो वो व्यक्ति जो ये कहता है कि मेरे तो पैर इतने पसरते हैं ना जी, जो 3-4 कमरों में आ जाएंगे, बाकी कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां मंगवा लूंगा, आप लोग आएंगे ना जी सुबह सुबह मिलने मुझसे, सुबह सुबह आया करोगे आप, तो आपको कहां बैठाऊंगा, तो 400-500 कुर्सियां मंगा लूंगा, बस इतना चाहिए मुझे। अगर ये ना कहा होता तो ये सिर्फ स्कैम होता। जबकि अरविंद केजरीवाल ने जब ये भी कहा और 45 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए, और आज आप ये कह रहे हो कि आप FIR कर दो, तो कल आप कहोगे देखो जी पॉलिटिकल विच हंट है। And it ये is सारी important मैंने आपको because the BJP has written to the LG asking for an investigation. राजकुमार जी, आप भी कुछ बोल रहे थे, यहाँ पे बोला जा रहा है या तो स्कैम है या वैनिटी प्रोजेक्ट। राजकुमार जी, मैडम, कोई भी बिल्डिंग गवर्नमेंट की अगर टूटेगी तो उसको एलजी से अप्रूवल लेनी होती है कि ये बिल्डिंग हम तोड़ रहे हैं, आपकी अप्रूवल चाहिए। अगर एलजी अप्रूव कर देते हैं कि बिल्डिंग तोड़ के आप नई बना लें, क्या इनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है जो एलजी से अप्रूवल ली हो इन्होंने? No, the interesting thing is that initially the order that was given was to say addition and renovation to happen. Then we had the ministers and the MPs of Aam Aadmi Party say कि हमने तो पूरा तोड़ के बना दिया. So there is so much which is grey over here, which is why people are saying, Dr. Sumansi Raman, कि ये scam है. जी. Yes, Rajkumar जी. No. मैडम, उन्होंने कहा कि हमने तोड़ के बनाया, तो बगैर एलजी की अप्रूवल के कोई चीज टूट नहीं सकती। इन्होंने अप्रूवल रेनोवेशन का लिया होगा, लेकिन बिल्डिंग इन्होंने तोड़ के जिस तरह से स्कैम इन्होंने किया है, ये तो मैडम बहुत छोटा 45 करोड़ का स्कैम है। इससे पहले शराब घोटाले हुए, कई और तरह के घोटाले
आप अगर इनकी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के ऊपर जाएंगे तो उसमें भी घोटाले ही घोटाले मिलेंगे। Okay. तो ये तो कहते कुछ है, करते कुछ है। It's very interesting turn of events, but the reason that we are addressing each one of these issues one by one, because there are voluminous details contained in these documents, right from how the whole tendering process was done, to how materials were chosen, to how some things are still completely unexplained. Why is a certain amount given for consultancy? Why is a certain amount just put away as extra? ये एक्स्ट्रा था तो ये किधर गया, किसकी जेब में गया, किस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ? All of these gray areas is why there is also a cloud over what definitely is a vanity project. I'm going to leave it at that. Also telling our viewers that tomorrow we are going to come with part 4. This is going to be ongoing. So hold on to your chair, Dr. Suman C. Raman. You will keep coming and we'll keep giving you more details also about it, including a full breakup. I promise you that. Thanks for watching.